ठीक जी मैम। ठीक है। आपका जो है वो फुट तक एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो उसमें आप लिमिटेड एग्जाम में इंस्पेक्ट करते हो, ठीक है। पेल्पेट पर इंस्पेक्ट पे वही स्कार मार्क्स और ये सारी चीजें, ठीक है। पेल्पेट करते हो तो पेल्पेशन में आपको फुट की सारी मूवमेंट्स देखनी होंगी, ठीक है। आप उसी वक्त जो है वो सेंसरी भी देख रहे होते हो, सिर्फ फुट तक जो है वो आप फिलहाल लिमिटेड हो, ठीक है। उसके बाद रेलिवेंट एग्जामिनेशन में फिर आप पूछते हो कि कैन आई एक्सटेंड माई एग्जामिनेशन टू लोअर लिम्स, ठीक है। फिर जब वो ठीक। मतलब आपको परमिशन मिलती है, फिर आप भले लोअर लिम्स की उसके साथ एग्जामिनेशन करो। फिर आप लोअर लिम्स में भी वही इंस्पेक्ट करो, पावर देखो, ठीक है। हील टू शिन टेस्ट भी करवा सकते हैं। एसएलआर आप जरूर देखो, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द पेरिफेरल एंड द रेडिकुलोपैथी, ठीक है। तो आप एसएलआर जरूर देखो। उसके बाद गेट आपने बिल्कुल सही कहा, वो भी रेलिवेंट एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। आप गेट देखोगे। तो रेलिवेंट क्वेश्चंस आप इस केस में जरूर, हर केस में पूछने चाहिए, इसमें जरूर इसलिए हैं क्योंकि एक आपको पता होना चाहिए कि आपको आप सेंट्रल कॉज के साथ डील कर रहे हो या पेरिफेरल कॉज के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। तो पेरिफेरल में आपको इंजरी का जरूर पूछना है, कोई भी इंजरी या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का पूछना है आपको। और सेंट्रल में फिट्स का जरूर पूछना है, पेशेंट को कोई फिट्स की हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये ज्यादातर जो होते हैं, वो तो आपको एग्जामिनेशन पे भी चीजें पता चल जाती हैं। अगर स्पास्टिक है, टोन उसकी बढ़ी हुई है, तो ज्यादातर वो सेंट्रल कॉजेज में होते हैं। फ्लैसिड है अगर फुट ड्रॉप, तो वो पेरिफेरल कॉजेज में होते हैं। तो इस तरह से, लेकिन आप क्वेश्चन में जरूर ये चीज पूछोगे। अच्छा, दूसरा, ये एग्जामिनेशन आपने सारी तकरीबन सही की, बस थोड़ा हेफाजत था जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो आप इन्वेस्टिगेशंस बता रहे थे बिल्कुल सही थी। इन्वेस्टिगेशंस में यही चीजें बताते हैं कि आप जो सस्पेक्ट कर रहे हो, आप वो भी इन्वेस्टिगेट करोगे। और आप डिफरेंशियल जो है, आपकी जो डिफरेंसेस हैं, आप उसको, जैसे रेडिकुलोपैथी को एक्सक्लूड करने के लिए आप एमआरआई भी करवाते हो। अच्छा, ये एमआरआई नॉर्मल है, ठीक है। इसमें सिर्फ थोड़ी सी अर्ली डिस्क डिजेनरेटिव चेंजेस हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एमआरआई इज नॉर्मल। कोई डिस्क, कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई रूट की जो है वो कोई इसमें कंप्रेशन नहीं नजर आ रही। दूसरा, आप डायरेक्ट एमआरआई ब्रेन की तरफ जंप नहीं करोगे। अगर आपको एक चीज नजर आ रही है कि वो पेरिफेरल कॉज है, ठीक है, और आपने लंबोसेक्रल भी देख लिया है, कोई पेशेंट हिस्ट्री भी इस तरह से नहीं दे रहा फिट्स की या क्या, तो फिर आप एमआरआई ब्रेन की तरफ नहीं जाओगे, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस आप नहीं करवाएंगे। फिर आपकी मैनेजमेंट होती है उसी फोकस्ड पेरिफेरल नर्व इंजरी पे। पेरिफेरल नर्व इंजरी जो है वो आप उसको कंजर्वेटिव पे रखते हो इनिशियली फॉर 3 to 4 वीक्स। और उसके बाद, क्योंकि 3 to 4 वीक्स पे आप अगर ईएमजी एनसीएस करवाते भी हैं तो आपको कोई फाइंडिंग्स नहीं मिलती, ठीक है। आप 3 to 4 वीक्स के बाद जो है आप ईएमजी एनसीएस करवाएं, उस पे आपको पता चलेगा कि वो, अगर न्यूरोप्रेक्सिया होता है तो वो आपको डिनर्वेशन के सिम्टम्स, उस पे साइंस नहीं मिलते, ठीक है। कौन कौन सी साइंस होती हैं मैं आगे बताती हूँ। पॉजिटिव शार्प वेव्स होती हैं, फिब्रिलेशन पोटेंशियल्स होती हैं, वो आपको तब मिलती हैं जब डिनर्वेशन हो रही होती है। अगर रीजनरेशन हो रही होती है तो ये आपको उस पे फाइंडिंग्स नहीं मिलती ईएमजी एनसीएस पे। तो उसके बेसिस पे फिर आप फॉलो करते हो। अगर नहीं मिल रही तो आप कंजर्वेटिव पे ही रखते हो, अगर मिल रही है तो इट मींस उसमें डिनर्वेशन हो रही है, तो आप सर्जरी की तरफ प्लान कर सकते हैं। सर्जरी के ऑप्शंस आपने सही बताए कि आप न ग्राफ्टिंग कर सकते हो, रिपेयर प्राइमरी का आपने नहीं बताया, पहले आप एंड टू एंड एनास्टोमोसिस बोलोगे। उसके बाद की सारी चीजें आती हैं, ग्राफ्टिंग है, ठीक है, नर्व ट्रांसफर है, और न्यूरोलाइसिस है, इंटरनली एक्सटर्नल न्यूरोलाइसिस, ये सारी चीजें जो है वो फिर आप, ये 3 4 ऑप्शन ही होते हैं। तो ओवरऑल वेरी गुड डॉक्टर अवेज, ठीक है। ये थोड़ा सा एटिपिकल टॉपिक होता है। दूसरा ये कि हमारे जहन में ये होता है कि जब लोअर लिम्ब की एग्जामिनेशन या फुट की एग्जामिनेशन आती है तो हम लोग समझते हैं कि भाई कोई रेडिकुलोपैथी है, कोई लो बैक पेन का पेशेंट ही है, या कोई रूट कंप्रेशन ही है, हमारे जहन में यही आता है। लेकिन जब आपको फोकस्ड फुट की एग्जामिनेशन कही जाए तो आपके फौरन दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ये फुट ड्रॉप का केस है, और ये कॉमन पेरोनियल, ज्यादा से ज्यादा यही है, मोस्ट कॉमनली कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी ही आती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सेंट्रल कॉज वो रख देते हैं क्या, लेकिन अगर इस तरह का कोई सेंट्रल कॉज होता है तो वो लॉन्ग केस में रखते हैं, इतने अच्छे केस वो शॉर्ट केसेस में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी होती है जो आती है, तो आपके जहन में ये 2 3 डिफरेंशियल्स जो है वो एकदम से आ जाने चाहिए। भाई फुट एग्जामिनेशन है तो उसमें ज्यादातर पेरिफेरल नर्व इंजरी का ही मुझसे पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, फुट ड्रॉप में। तो ओवरऑल वेरी गुड।
बाकी आगे जो मैंने चीजें ये सारी बताई हैं वो मैंने उसको एक फॉर्मेट में भी लिख दिया है कि पहले आपकी एग्जामिनेशन सिर्फ फुट तक लिमिटेड होगी। ठीक है, आप फुट के इंस्पेक्शन में डिफॉर्मिटी है, कोई एट्रोफी, स्किन चेंजेस, कोई भी जो है वो आप सेंसरी आप भले फुट का पहले पेशेंट पे देख लें। वही पल्स है आपको, हाँ पल्स आपको जरूर देखनी है। ठीक है, आप डॉर्सैलिस जो है वो देखते हो, डॉर्सैलिस पीडस। ठीक है, दूसरा फुट में आपकी सारी जो मूवमेंट्स हैं आप वो करते हो। ठीक है, और इसके बाद टिनल साइन, हाँ वो फिर आप जब एक्सटेंड करते हो अपना एग्जामिनेशन तो आप टिनल साइन जरूर देखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो फिर आपको करनी होंगी रेलिवेंट एग्जामिनेशन पे। जैसे मैंने बता दिया, लोअर लिम्ब का सारा फिर आप एग्जाम करो, सारा नहीं एज सच जो है वो एसएलआर है या पावर वगैरह ये सारी चीजें। क्योंकि जो मैंने एक चीज पूछी थी कि सायाटिक नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व में किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, तो सायाटिक नर्व में हिप की सारी जो है मसल्स वो भी इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, नी की मसल्स भी इन्वॉल्व होंगी, तो उसको कहते हैं फ्लायल फुट, फ्लायल लेग कहते हैं, फ्लायल फुट कहते हैं, इस तरह से कुछ होता है। ये लिखा हुआ आगे आएगा। ठीक है, दूसरा गेट आपने सही कहा, बिल्कुल गेट जरूर चेक करेंगे। ठीक है, प्रोनेटर ड्रिफ्ट आप रेलिवेंट में आप कर सकते हो, आपका सेंट्रल कॉज जो है वो उससे एक्सक्लूड हो सकता है प्रोनेटर ड्रिफ्ट, अगर कोई जो है वो कोई कॉर्टिकल लीजन है या पैराकॉर्टिकल। ठीक है, सेडर एनेस्थीसिया वेरी गुड, आपने मेंशन किया। ठीक है, करते नहीं है लेकिन आपको मेंशन जरूर करना है। ठीक है, रेलिवेंट क्वेश्चन में जो मैंने बताया कि भाई ट्रॉमा का और फिट्स का एटलीस्ट आप पूछोगे, ताकि वो एक चीज आपकी एक्सक्लूड हो जाए। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपसे अभी पूछे थे, इसके सारे मैंने आंसर्स भी लिख दिए हैं। ब्रॉडली आपसे कोई पूछे कि भाई फुट ड्रॉप के क्या क्या कॉजेज हैं, तो आप उसको दो में डिवाइड कर दें भले, सेंट्रल एंड पेरिफेरल कॉजेज। पेरिफेरल कॉजेज में आप डिस्टल टू प्रॉक्सिमल चलते जाएं तो पेरोनियल नर्व इंजरी है। ठीक है, शायाटिक नर्व इंजरी है। ठीक है, उसके ऊपर जो है लंबर प्लेक्सस है आपका, लंबर प्लेक्सस की इंजरी है। रेडिकुलोपैथी, डिस्क प्रोलैप्स है। तो ये सारे कॉजेज आप डिस्टल टू प्रॉक्सिमल जाएंगे तो ये पेरिफेरल नर्व को ट्रेस करते हुए सारे आपके पेरिफेरल कॉजेज आ जाएंगे। ठीक है, सेंट्रल कॉजेज में आपका कोई अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, जैसे कोई सर्वाइकल माइलोपैथी भी कभी कभी उसमें फुट ड्रॉप होता है। दूसरा पैरासाजाइटल मेनिंजियोमा में होता है, उसमें स्पास्टिक फुट ड्रॉप होता है। बाकी सिस्टमिक कॉजेज में लेड पॉइजनिंग है, डिस्ट्रोफी आपने बताया, तो ये कुछ जो है, लेकिन उनमें ज्यादातर बायलैटरल होता है, यूनिलैटरल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप फिर भी एक्सेप्शंस में बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा इन्वेस्टिगेशन में आपने सही बताया, आप एक्सरे एमआरआई करवाएंगे। और एमआरआई ब्रेन तब जब मैंने आगे लिख लिया है कि इफ आप सस्पेक्ट कर रहे हो, तो अदरवाइज आप इतना जो है वो एक्सटेंसिव उसमें नहीं जाते हो। ये भी मैंने बताया कि अगर सिर्फ सीपीएन की इंजरी है तो उसमें फुट ड्रॉप होगा, सायाटिक नर्व की है तो उसमें फ्लायर लेग होगी, क्योंकि उसमें सारी चीजें जो है वो आपकी जाती हैं। फुट में भी सारी मूवमेंट्स जाती हैं। ठीक है, नी पे भी जाती हैं। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन जो आप कह रहे थे वो है, दो क्लासिफिकेशन होती हैं, सेडॉन एंड सुंदरलैंड। ठीक है, सेडॉन ने तीन में डिवाइड किया, न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस एंड न्यूरोटमेसिस। बाकी उसने सुंदरलैंड में 5 क्लासेस में डिसाइड उसको किया है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या डिसरप्ट होता है, एंडोन्यूरियम, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, कौन कौन सी चीज जाती है, किस में चांसेस होते हैं। ठीक है, ये आपको वेलेरियन डिजेनरेशन का पता हो क्या है। ठीक है, कितने स्पीड से रीजनरेशन होती है पर डे, 2 to 3 mm पर डे के हिसाब से, ये भी आपको पता हो। ठीक है, हाउ विल यू मैनेज इनिशियली कंजर्वेटिव ईएमजी 3 to 4 वीक्स के बाद आप करते हो, ये भी मैंने चीजें बता दी कि भाई डिनर्वेशन अगर है तो पॉजिटिव शार्प वेव्स और फिब्रिलेशन पोटेंशियल्स मिलती हैं। ठीक है, अर्ली सर्जरी और लेट सर्जरी के इंडिकेशंस आपको पता हो। अर्ली सर्जरी आप विद इन 24 to 48 आवर्स करते हो, क्योंकि फ्रेश जो है फ्रेशली कट वूंड होता है, शार्प होता है, तो उसकी एजेस आपको आराम से अप्रोक्सीमेट एंड टू एंड प्राइमरी रिपेयर पॉसिबल होता है। लेकिन आफ्टर 48 आवर्स देयर इज एडिमा, जिसकी वजह से थोड़ा प्राइमरी रिपेयर मुश्किल होता है, तो फिर उसके बाद आप वेट ही करते हो और फिर ईएमजी एनसीएस करवाते हो, उसके बाद आप डिसाइड करते हो। बाकी लेट सर्जरी में आप देखते हो अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही 2 to 5 मंथ्स तक, दूसरा कोई मेडिकल मैनेजमेंट पे पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है, या कोई सूडो एन्यूरिज्म या कोई क्लॉट बन गया है उस जगह पे, तो फिर आप लेट सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं। यही मेथड्स पूछते हैं, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, नर्व रिपेयर, नर्व ग्राफ्ट और नर्व ट्रांसफर। नर्व ग्राफ्ट में सिर्फ पार्ट ऑफ नर्व करते हैं, नर्व ट्रांसफर में पूरी नर्व आप जो है वो करते हो। न्यूरोलाइसिस में मतलब ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है नर्व में और नर्व रिपेयर नहीं हो पा रही है, तो आप नर्व को
ऐसे मतलब कर देते हो, बिल्कुल कट कर देते हो नर्व को इंटरनल एक्सटर्नल न्यूरोलाइसिस में, उससे पेन रिलीफ हो जाता है। ठीक है, पढ़ना कहाँ से है अब, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट केस है तो उसमें थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपसे वाइवा में स्टेप्स पूछते हैं। रेमिनेडर तो सही है, रेमिनेडर की 3-4 किताबें हैं। एक किताब इसकी ये है, ये वाली न्यूरोसर्जरी केस रिव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स बाय रेमिनेडर। इसमें केस स्टडीज हैं, जिस तरह केस दिया हुआ है उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको शॉर्ट केसेस के लिए देखना है तो उसका केस 147 फुट ड्रॉप का है, उसमें उसने सारे सवाल जवाब ऐसे अच्छे से उसके लिखे हुए हैं, ताकि आपसे जो शॉर्ट केसेस में वाइवा पूछते हैं उससे आपको चीजें कवर हो जाएंगी। बाकी ग्रीनबर्ग में अच्छा लिखा हुआ है, ग्रीनबर्ग का शुरू वाला चैप्टर जो है जिसमें पेरिफेरल नर्व का उसका लिखा हुआ है, कॉमन पेरोनियल नर्व का, और दूसरा आखिर में ये सारे फुट ड्रॉप के कॉजेज जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाला चैप्टर है, उसमें ये सारे लिखे हुए हैं। बाकी पेरिफेरल नर्व में ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड में लिखा हुआ है, स्पाइन वाले में 2 चैप्टर्स 98 और 103, इसमें पेरिफेरल अपना कॉमन पेरोनियल नर्व के बारे में लिखा हुआ है सारा, अप्रोच के बारे में, स्टेप्स के बारे में। तो दिस इज ऑल। कुछ पूछना हो इसमें डॉक्टर अवेस, एनीथिंग? हाँ, बस मैं यही पूछना था मटेरियल कहाँ से, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो पूरे क्वेश्चंस है मैक्सिमम कवर इन चीज़ों से हो जाए तो बेटर है। समझ नहीं आती भी कभी कभी क्वेश्चंस की। ठीक है बस मैम। ओके ओके, किसी और को कुछ पूछना हो? Should we move on to the next case? Thank you, Dr. Avis. ओके, सो नेक्स्ट केस के लिए कौन करेगा? आई थिंक सब थक गए हैं। डॉक्टर अतिया। Yes, ma'am. I'll do it. ओके ओके, दैट्स गुड। ओके, सो डॉक्टर अतिया, दिस इज योर command. Examine the upper limbs of this patient. Okay, first, after introducing myself, taking the consent from the patient, I'll expose the patient. Since this patient is already exposed, otherwise I'll expose the patient. I would like to, in paper, usually the patient, in the exam, usually the patients are wearing shirts. So we could ask the examiner, we would like to remove the shirt. If not, we will go the limit with the limited exposure. On the inspection, I'll look for the scar marks, any fasciculation, any muscle wasting, any changes in the color of the fingers. And I look at the palmar side, and then I look at the dorsal side, ask the patient to do the passive movements like lift the arm and move the fingers. And then I'll go and measure the bilateral radial pulses, inspect the thenar, hypothenar muscle wasting and see the temperature, temperature of the bilateral limbs. And then I'll measure the muscle bulk. And then after the muscle bulk, I'll check the tone in all joints, and then I'll start the assessment of the power of the upper limb by finger abduction, adduction, then grip, thumb extension, flexion, adduction, abduction, forearm flexion, extension, then shoulder adduction, abduction, and then we will do the reflexes at the bicep, tricep, and brachioradialis. Then Hoffman. Then we jump to the sensory part, and we'll do the pinprick in C5, C6, C7, C8, T1, T2, and C5 dermatome, and then proceed accordingly to the findings, do the proprioception, and then according to the findings, I'll proceed, do the extension. I'll examine the spine, neck, and if there we have a upper motor neuron findings. If the Hoffman is positive, I'll do the jaw jerk. And if jaw jerk is positive, along with that, I'll do the basic cranial nerve assessment, and they'll check the planters quickly. Okay. So, can you tell me exactly where will you check the dermatomes? C5 to T1? For C5, I'll check in for C5 at the badge area on the upper, on the arm, and for C6 on the thumb, for C7 at the pulp of the middle finger, for C8 in the little finger, for T1 on the medial side of the forearm, or for T2 in the arm in the axillary, around the a little lower than the axillary region. Okay. So, are you done with your exam? Yes, ma'am. Okay. And These if I are your- have time, I will take. Okay. These are your findings. Okay.
Okay. So these are all open So, motor neuron signs. The patient okay, has increased tone with decreased power, and reflexes are exaggerated, and sensory level is C4, but lower cranial nerves are intact, and cerebellar is negative, so the lesion is in subaxillary spine. okay. So, your localization is subaxial C-spine, right? Yes, ma'am. Okay, so what are your differentials? Uh, may I know the He's a age young of the patient, patient? He's a young patient. young Okay. male. So it can be, so And there is I no didn't history ask of the two trauma. questions. You I should didn't have ask the asked, two questions. yes, you should have. I skipped those. Okay, so Okay. I'm telling you, there is no history of trauma, and this is a young male. Okay. Now, what are your differentials? Mm, It can be a neoplastic lesion. Okay, And second differential. Okay, so degenerative you were suspecting only neoplastic. Any other differential? literally upper myelopathy, multiple stenosis, but the patient is young. Okay, you mean degenerative? Patient is young, degenerative. Can be, yes, ma'am. Disc causing a spinal stenosis at that Okay, level. okay. So in neoplastic, okay, what investigations will you order? For the targeted investigation, I would like to get an MRI cervical spine with contrast. Okay, so this is your MRI. Oh, Please read the scans. okay, MRI cervical spine, sagittal and axial cut, T2-weighted image. On the MRI, we can see there is the distension of the cord at 2, 3, 4, 5, 6, 7, more in the C6, 7 region. The cord is distended, causing obliteration for anterior and posterior CSF column. And there is no, is there a syrinx upward? There's no syrinx. This is most likely a central canal, and vertebral bodies are normal with normal height and space of the intervertebral disc space, and there is no tonsillar herniation. Posterior ligamentous complex is intact. On an axial cut, there is a dilatation of the spinal cord, and I cannot appreciate any other Okay, anomaly. okay. So now what's your differential? Most likely a intramedullary lesion. Okay, intramedullary, what kind of lesion? It can be a tumor, or it can Okay. be a syringomyelia. There is a CSF's increased signal on the T2, so it can be a syringomyelia. Are the signals within the cord similar to the CSF signals? No, ma'am, it's less hyper intense. It's hypo intense compared to the Okay, CSF. so is it in favor of syringomyelia? No, ma'am, more in the favor of a tumor, neoplastic. Okay. Okay. So what exactly, which tumors? Intramedullary, it can be an astrocytoma. It can be an epidymoma, more commonly. And then it can be either a dermoid or epidermoid. Okay. On the basis of this radiology, I mean, which pathology will you prefer? I mean, is it an astro or an New epidemic or a dermoid? How will you differentiate radiologically? Okay, an astrocytoma will have a hypotoisogoic appearance, and it will be in epidermo will be central. Astrocytoma won't be central. It will have a lateralizing, somewhat lateralizing, and then according to age, astrocytomas are more common in. I think I'm mixing it in pediatric group and epidemoma in adult. I think I'm mixing that. Okay. Yes, ma'am. Okay. Any other radiological difference, which is very typical of one Astro of and these tumors? epidemoma. No, I'm sorry, I cannot recall.
Okay, okay. So how will you Astrocytoma manage has this? cyst associated with it. Sorry? Cystic. Astrocytoma has has a cystic tumor too, component 2 to the tumor. Okay. Would it be a hemangio? Then we would be able to see the flow voids on T2. Okay, I cannot see any flow voids. okay. So how will you manage this case? Uh, since after the MRI, now I'll consult my patient regarding the disease, that there is a tumor in the cervical spine and it's most likely intermedullary within the cord, and the patient is developing deficits, and the definitive treatment for it is surgery. And for surgery, I need to admit the patient and do other investigation and prepare the patient for the surgery. I would like to get the CT scan to assess the bony anatomy betterly, in case since we are going to do the surgery, and if I need to fix, so I need to see the bone density and also assess the size of the pedicles or lateral mass, to get the screw up relevant size. And then I'll admit the patient, do the baseline investigation, and prepare him for the surgery. Okay. So what will be the steps of the surgery? What are the prerequisites of surgery? So a day, a day before the surgery, we need to inform the OT staff regarding the availability of the intraoperative neuromonitoring. And I would be needing the microscope, ultrasound, and it's not a meningioma, so QSA isn't needed in this. So I will need an intraoperative monitoring microscope and CR and ultrasound. Okay, okay. Would you need a accuser? It's more for the fibrous tumor we use. I'm suspecting it to be astrocytoma or ependymoma, and it's an intermedullary tumor. So I think these are the soft tumors, so we don't need the QSA. Okay. So how will you go with the surgery? What are the steps of surgery? Okay, on the day of the surgery, after shifting the patient to OT, after intubation, patient will be placed in the prone position with the padding of the all relevant sites, ulnar nerve and peripheral nerve, peroneal nerve, and padding of the eyes, and head will be fixed in a Mayfield position, or we can, if not available, we can go with the donor gel. And I show, sorry. A minute. Neck will be flexed, so there is more spaces available. And after cleaning and draping, localization of the site by the means of CM, I'll give us in midline. And after the application of neuromonitoring, we will give a midline in CN, and do the with the help of plate with the monopolar cautery, we will cauterize the subcutaneous tissue and fat, and then do the subperiosteal dissection by the means of periosteal elevator. Then apply a self-retaining retractor. Then again localize the required level vertebra and do the laminectomy, one level above and below the lesion. So in this case, we will be doing a 4-level laminectomy, since our lesion is around, no, more than 4. 1 minute, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So I'll go with the 4 to T1. We will do the laminectomy. And then after that, after laminectomy, we will clean the operative field free of any blood, place the cauterized patties at the side, and then open the dura in the midline, durotomy, and then take a stay-up sutures to expose the dura. And after that, we can use the ultrasound to assess the location of the tumor correctly, and they take the few chunks of biopsy. And after that, we will close the dura in a watertight fashion. We'll do the maximum safe resection, and then we'll close the dura in watertight fashion. We can apply the Surgical and fibrin glue to prevent any CSF leak. And then since we are doing 4-level laminectomy, I would like to do the lateral mass fixation. And then after that, we'll close the skin and reverse pattern. We close the facial layer, then we could close the subcutaneous fat, then subcuticular and the skin feature, and apply the Philadelphia collar, and then shift the patient to the ICU for monitoring. Okay. Is it possible to resect this tumor completely? No, ma'am. It's not possible. It's an Why? intermedullary Why? tumor. It's difficult. If it were an ependymoma,
then Appendymoma give us a proper plane. It's possible to get a maximum possible safe resection in that. And if it's astrocytoma, we will just take the few pieces of biopsy. okay, okay. So Dr. Athiya, you were very good, very good. Thank you, ma'am. Very good. You did the examination in a very systematic way, first of all, and you told the radiology and the basic investigations very appropriately. You told the steps very fluently, and एक दो चीजें जो थी वो जो मिस हुई थी वो ये थी कि आपने क्वेश्चन नहीं पूछा। एक तो Yes, ma'am. ट्रॉमा का क्वेश्चन आपको पूछना था, ठीक है, ये आपने मिस किया। और दूसरा शायद आपने लोअर क्रेनियल नर्व्स नहीं देखी देखी थी। जी मैंने कहा था बेसल क्रेनियल। अच्छा ठीक है, सही, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ इट वाज वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। Thank you. बाकी ये है कि जो रेडियोलॉजी, हाँ एक और चीज, रेडियोलॉजी पे किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। ऑल आई वाज आस्किंग वाज अबाउट द सीएसएफ कैप साइन, जो आपको एपेंडाइम में मिलती है, एस्ट्रो में नहीं मिलती है। Okay. ठीक है, सीएसएफ Thank कैप you, ma'am. साइन होती है। एंजियो का आपने बिल्कुल सही बताया कि आपको फ्लूइड्स मिलते हैं, वो आपको इसमें नहीं नजर आ रहे, तो फिर आप उसमें कर सकते हो। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें सारी चीजें आपने बताई थी, बेसिक फॉर्मेट वही है अपर लिम्ब की एग्जामिनेशन का, यही सारी चीजें हैं जो बार बार हर जगह पे लिखी भी होती हैं, हर जगह पे बताते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। ठीक है, एस्ट्रोसाइटोमास जो हैं पूरा टॉपिक है, ये लॉन्ग केस में भी आ सकता है, शॉर्ट केस में भी आ सकता है, तो इसको आपने एक्सटेंसिवली पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने उससे लिखे, रंगाचारी से आई थिंक मैंने लिखे हैं, लेकिन मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये लॉन्ग केस बाय द वे मोर और लेस डिस्कस होगा शायद। जो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आपको एक्सटेंसिव चीज पढ़नी है। अब एक्सटेंसिव के बारे में मैं मतलब मेरा क्या है कि न सिर्फ आपको इंट्रामेड्यूलरी ट्यूमर्स आने चाहिए, न सिर्फ आपको एस्ट्रोसाइटोमा आना चाहिए, बल्कि आपको न्यूरो मॉनिटरिंग आनी चाहिए। ठीक है, न्यूरो मॉनिटरिंग के लिए रंगाचारी में अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा योमेन में अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है वो ट्यूमर्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। स्पाइनल सारे ट्यूमर्स रंगाजारी में अच्छे हैं, तो वो आप उसमें से जरूर पढ़िएगा। ग्रीन सही से वो आपको नहीं देता ओवरव्यू। बाकी न्यूरोसर्जरी केस रिव्यू बाय रेमी नाइडर, उसमें भी जो है वो एक अच्छे अच्छे केस डिस्कशंस हैं। उसमें इंट्रामेडुलरी स्पाइनल ट्यूमर का केस 128 है, उसमें भी अच्छा लिखा हुआ है। दूसरा ये कि आप जो भी आपके ट्यूमर्स हैं, अगर आपको थोड़ा सा उनकी केस स्टडीज जितनी आप करेंगे रेमिनेडर से, तो उतने ज्यादा आपको, रेमिनेडर मेरे ख्याल से 2 या 3 केसेस ही हैं, एक केस इंट्रामेडुलरी ट्यूमर का है और एक केस शायद एक्स्ट्रा मेडुलरी का है। तो उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा आप उसको जितना रिवाइज करेंगे तो उसमें सारे पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं। तो आई होप बस यहाँ तक इतना ही इसमें आना चाहिए, और ज्यादा कुछ नहीं। कुछ पूछना हो तो आई एम हेयर। डॉक्टर अतिया, कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. Thank you. मैम काइंडली ये बताइएगा कि एस्ट्रोसाइटोमा को और एपेंडाइमोमा को रेडियोलॉजी के लिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? रेडियोलॉजी में ये होता है कि जो एस्ट्रो होता है इट इज वेरी डिफ्यूज, जिस तरह से इसमें है। ठीक है, बहुत डिफ्यूज होता है, कहीं आपको प्लेन इस तरह से नहीं क्लियर नजर आ रहा है। ये जो है इंट्रामिडलरी पूरा एक्सपेंड हुआ हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। जो एपिडाइमोमा होता है वो थोड़ा सा फिर भी जो है उसमें थोड़ा आपको क्लियर। दूसरा ये कि ये इट इज नॉट अ कंट्रास्ट इमेज, तो वो एग्जैक्टली मैं नहीं समझा पा रही हूँ। ये T2 है, कंट्रास्ट में आपको ज्यादा अच्छा थोड़ा सा मतलब क्लीवेज मिलता है। दूसरा ये कि यहाँ पे ऊपर होता है CSF कैप साइन। ठीक है, वो ज्यादातर वो आप इमेजेस देखेंगे और भी ज्यादा MRI के, तो CSF कैप साइन जो है वो एपेंडाइमोमा में होता है, वो एस्ट्रो में नहीं होता है। एस्ट्रो में कभी कभी पोलार सिस्ट आपको मिलती है, लेकिन वो एक साइड पे होती है, दोनों साइड पे नहीं होती है। तो कैप साइन के लिए आप देखते हो, मेन डिफरेंस ये होता है। बाकी तो जाहिर सी बात है, जब आप इंट्रा ऑपरेटिव जाते हो तो आपको ज्यादा बेहतर पता चलता है कि एस्ट्रो है तो उसमें आपको सही मार्जिन नहीं मिलेंगी, एपेंडाइमोमा होगा तो आपको मार्जिन मिलेंगी। बाकी और सारी चीजें जो है वो तो फिर आप इंट्रा ऑपरेटिव देखते हो। थैंक यू MRI पे मैम, थैंक कैप्स। यू मैम। ठीक है, कोई और क्वेश्चन चैट बॉक्स में क्या है? हाउ इज एंडोस्कोपिक स्पाइनल ट्यूमर रिसेक्टेड? एंडोस्कोपिक का मैंने तो नहीं अभी तक कोई ऐसा, मे बी आप बायोप्सी लेते हो, आई एम नॉट श्योर कि एंडोस्कोपिक, मुझे याद नहीं आ रहा। हम लोगों ने जितनी भी की है माइक्रोस्कोपिक ही करते हैं।
ठीक है, और डॉक्टर अवेस ने पूछा है कि आफ्टर माइलोटमी वी कैन फाइंड अ पेन। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसी पे मुझे बात याद है कि माइलोटमी आप मिड लाइन में करोगे तो मिड लाइन आइडेंटिफाई करने के 2-3 तरीके होते हैं, तो वो आप लोग को जहन में होने चाहिए। मिड लाइन आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। और स्फिंक्टर्स का, हाँ डॉक्टर मिशाल कह रही है स्फिंक्टर्स का आपने नहीं पूछा, बिल्कुल वो जरूर था पूछना। तो ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो शुड वी मूव ऑन टू केस 3 या थक गए हैं सब? कर ले मैम। Yes, ठीक ma'am. है, करते सो हैं. ओके डॉक्टर बाबर, हैव यू विल यू शेयर द स्क्रीन और हैव यू सेंट मी? I have sent you the file, तो आप पहले ओके, share. जस्ट गिव मी अ मिनट। तब तक सेलेक्ट कर लें कौन वॉलंटियर कर रहा है। Who is going to volunteer for the third case? Short case के लिए कौन volunteer कर रहा है? Kindly raise hand जो third case करने लगे. It's a very interesting case. So, okay, Dr. Ajit. यस सर, सलाम वालेकुम सर. Walaikum salam. It's a very good case. So, and very important one as well. So let's do it. Let's wait for the screen to share. Okay, so Dr. Ajit, can you see the screen? या आई एम सीइंग द स्क्रीन. Okay, so your command is to examine the hands. First of all, I would like to introduce myself and take permissions from the patient as well as the examiner. Then I will inspect the patient from the front and then back, and I will compare the thenar and the hypothenar muscles, and I will also check for any tremors or not, there is visible pulsations or not. Then I will inspect for the any scar mark or any previous surgery has been done or not. Then after I will go for the dorsal and this and palm dorsal aspect of the hand. I will inspect the dorsal aspect of the hand. Then I will check for the clubbing or any there is a cyanosis or not. Then after I will palpate bilateral pulse and temperature, pulse and the temperature. Then I will assess the power of the first of all wrist. Then after first of all bilateral wrist, and then every interossei, palmar interossei and the dorsal interossei. Then after the thumb adductor pollicis, then I will examine the power of the thumb in 4 directions. That after that, I will check for the light touch and the pin prick for the sensation. Then I will check for the tinile test, and that is namaste sign and inverted namaste sign. And I will finally ask for the patient, is there any trauma or not? All right, you are done with the examination. Yes, sir. Would you like to extend your examination? You still have time. I would like to extend the first of all upper limb examinations. First of all, tone and the power of the forearm and the arm, and the pronator drift. And I would like to check the neck of the patient. Why you are checking the neck of the patient? Because I want to see there is the pathology is due to the radiculopathy or not.
Okay. We'll ask that in the question and answer section. Sorry. So let's come to the findings. So these are the positive findings in the patient. As you can see in the picture, there's thenar vesting on the left side, and Phelan's test was positive, tunnel sign was positive, and thumb opponents was weak on the left hand. According to the findings, the most probable diagnosis is the carpal tunnel syndrome. Okay, all right. So what could be the other differentials other than the carpal tunnel syndrome? Other than the carpal tunnel syndrome, there could be the thoracic outlet syndrome, or another is the C6 radiculopathy due to the degenerative disc disease, and yes, these three differentials. What are the contents of carpal tunnel? What The structure? contents of first of all, the flexor carpi ulnari, flexor carpi radialis, flexor tendons, and there are the multiple tendons, median nerve, ulnar nerve, and Ulnar nerve passes through the tunnel. no, it passes to the Gwen's canal actually. Sorry. Okay, so what makes up this? There are the different flexors. There are the tendons of the. There are the different flexors, groups of the flexors tendons and the median nerve. All right. So what makes up this tunnel basically? This carpal tunnel. Yes, carpal It tunnel. to the flexor retinaculum. All right. So what are the causes of carpal tunnel syndrome? So the carpal tunnel syndrome are first of all the there is a hyperthyroidism or pregnancy, diabetes mellitus, trauma. Yes. How you will investigate this patient? I would like to investigate with the NCS and EMG of the patient. What would you see in the NCS and EMG? There is decreased latency, and decreased latency in no, there is increase in latency of the patient, and And what would be the other features in the favor of carpal tunnel syndrome? the other features are like except the findings. In the NCS, nerve conduction study, you see the latency. There is a thinner wasting. Phelan sign was positive. Tinel sign was also positive, and there is a weak opinions muscles, and there is also the sensory losses over the. And Okay, what other investigations you will ask for? I would like to go for the blood. First of all, I would like to go for the thyroid profile. Okay. Then SB1C of the patient. Either she is pregnant or not, we will confirm that. Okay. How you will And manage? MRI of the wrist. We will manage the patient. First of all, there are the two management procedure. One is the expectant management. In expectant management, we can use the splint at the night times, and surgical management. The surgical management is the either endoscopic or open releases of the carpal tunnel. Okay. Tell me the surgical steps of open carpal tunnel release.
First of all, we will identify the line extending from the base of the thumb to the hook of the hamate. It is called the Marquardt line, Marquardinal's line. Then a line is drawn from the base of the ring finger, straight up, medial to the just medial to the crease of the hand, and we will give the incision about 3 to 4 centimeter from the distal crease of the wrist. Then linear skin incision is given. And we will not cross the palmar crease. After skin incision, we will separate the subcutaneous tissue, and there is a fat over there, and we will identify the retinaculum, and below it there is a median nerve and different flexor tendons are there. Then we will start to cut down the flexor retinaculum up to the proximal crease of the wrist. Then then hemostasis is achieved, and suturing is done with the Prolene 10 or 20. What are the post-operative complications of this procedure? The most common post-operative complications is due to the hematoma. There is a swelling, and another is there is a inadequate releases of the carpal tunnel, and one is it might be injury to the median nerve. Okay, here are a few bonus questions. If the patient has carpal tunnel syndrome in both the hands, which one you are going to operate first? If the patient has a both hand the carpal tunnel, which one is which one is more severe, we have to operate that first. Painful one is operated first. And if there is no pain in both hands? If the severe weakness part is operated first. No, sorry sir, जिसमें weakness कम हो उसको ऑपरेट करते हैं फर्स्ट. Yes. जिसमें weakness है उसको पहले ऑपरेट करेंगे. जी सर. The better neurological hand is operated first. Okay sir. Okay, apart from it, you were excellent, Dr. Jeet. You answered almost all the questions. In examination, you did very well. And I think you answered all these questions. Regarding the NCS, in the nerve conduction study, you checked 3 things. Latency. Latency is increased in the damaged nerve, in the median nerve. और 2 चीजें इसमें देखते हैं हम, amplitude and velocity. Amplitude and velocity would be decreased. अच्छा, एक और इसमें important point होता है, sensory latency is more specific than the motor latency. Okay, so the hand examination, you check almost everything. अच्छा, जो नमस्ते साइन आप कह रहे थे, it's called the Phelan's test. It is more specific. Tunnel sign आपने check की, ठीक है, बाकी almost everything you have checked. So this is a checklist for the hand examination. अच्छा, इसके differentials जो हैं, आपने बताया C7, C6, C7 की radiculopathy हो सकती है, plus median nerve की compression at the level of elbow. That is also another important point. तो investigations में भी आप start करेंगे. Wrist का X-ray कराना is very important to rule out the trauma. Investigations को आप divide कर दीजिए with the blood workup. Blood workup में आपने सारी करवाई, जो भी इसकी causes हैं उसको rule out करने के लिए HbA1c, thyroid profile, amyloidosis को rule out करेंगे यहाँ पे. Then coming to the imaging में आप X-ray कराएंगे wrist का, and you need to rule out the Pancoast tumor. उसके लिए आप X-ray chest करवा सकते हैं, और the extra cervical rib को rule out करने के लिए. Then if you are suspecting the patient might have the radiculopathy, तो उसके लिए हम MRI cervical spine करवाएंगे. And the most specific investigation is the NCS. Management आपने बिल्कुल सही बताई. And the complications की भी लंबी list दी हुई है, neuroma, skin infection.
बस most common ones आपने सही बताई कि it is the inadequate release of the tendon or the hematoma formation at the site. Okay, so you were very good, Dr. Ajit. Do you want to ask any question regarding this station? No, sir. Thank you, sir. Okay, if there's no question, let's come to the last station. Who is going to volunteer for this? Again, a very easy station. So anyone who wants to volunteer? Sir, I will volunteer, Dr. Mujahid. Dr. Mujahid? Yes, sir. Okay, so your time starts and you have to do the examination of the lower limbs. Sir, first I will introduce myself to the patient, then I will get permission for the proper exposure, or I will proceed with the limited exposure after telling to the examiner. Sir, then I will inspect the limbs from all sides, from the foot side and from the both lateral and downside of the limbs. After for score marks, visible pulsation, or any muscle wasting, then sir, I will check the temperature and I will check the pulse on the both feet. Sir, then I will check the bulk of the both lower limbs below the shin on equal distance. Then sir, I will check the tone in both limbs. At that point, sir, I will decide it is either upper motor neuron injury, matlab lesion, or it is lower motor neuron type of injury. At this point, if I am suspecting upper motor neuron injury, I will, sir, check superficially the motor power components. If the tone was decreased, then I will check, sir, every myotome separately and compare bilaterally. Sir, after that, I will check the reflexes, SLR, Faber, and I will, sir, then I will check the reflexes, sir, of the both limbs separately. Sir, after that, sir, I will check the sensory with the pinprick at all sensory dermatomes. Then I will, sir, check the position and proprioception. And then I will ask from the patient. I want to check the saddle anesthesia, as well as I will ask from the examiner. Sir, at the end, I will check the spine for any tenderness or temperature or signs of infection at the lower back. Sir, at the end, I will ask for the ask from the patient if he or she can walk. I will get the patient walk. Sir, at the end, I will ask from the examiner 2 relevant questions. Yes, you are allowed. Sir, I will ask about any history of trauma and No. okay. So other question I will ask about is the pain. Is there any pain that get worse with the lying down? Sorry, come again. क्या question पूछ रहे हैं आप? सर पूछूंगा कि पेन लेटने से वर्स तो नहीं हो जाती आपकी अगर लोअर बैक पेन है? Worse हो जाता है. वर्स हो जाता है। सर ये 2 क्वेश्चन या फीवर का पूछ लूंगा, थर्ड क्वेश्चन इन केस अगर, या 2 को फीवर प्लस पेन का पूछ लूंगा। Okay. Relevant examination में कुछ करना चाहेंगे आप extend? Relevant में sir, if the sensory level I could not find the sensory level, I will extend the sensory level upward. Okay. Sensory level आप lower I limbs में can check करते हैं. What are the points? sir, at the lateral side of the foot for S1, medial malleolus up on the between the second and the third digit on the dorsal surface for L5, medial malleolus as for sir L4, and the medial side of the sir knee joint for L3, and L2 mid of the thigh, medial side most of the time, and for L1 sir ligament level, I think ligament, the name I forgot. अच्छा, power कहाँ पे check कर रहे हैं आप?
कौन कौन सी मूवमेंट करवाएंगे लोअर लिम्ब से, कौन कौन से लेवल पे चेक कर रहे हैं? Sir, knee, I will check the, sir, I will ask the patient from knee extension for L2, L3 sometime combined, or L2 specifically, and I will ask the patient to bend the knee against the resistance. ठीक है, For, sir, L4, for L5, I will ask the patient to dorsiflex both foot. I also get specifically dorsiflexion of the toe. For, sir, S1, I will, sir, check the plantar flexion. If I am नहीं, subtracting, sir, lower, yeah, yes, sir. specific myotomy नहीं, I'm asking all the movements. Hip पे कौन कौन सी movements आप check करेंगे? Sir, hip, sir, flexion, extension, and sir, abduction and adduction, all four movements. Okay, ankle पे कौन कौन सी movement check करेंगे आप? Ankle में sir, dorsiflexion, plantar flexion, eversion, eversion. Okay, fine. And Uh, knee पे plantar sir, check knee पे flexion extension. plantars check किया आपने? Sorry sir, I forgot plantars. Yeah, that's a big blunder. अच्छा, बैक पे आप क्या क्या चीजें चेक कर रहे हो? Yes sir. बैक पे आप क्या क्या चीजें चेक करेंगे? Back पे sir, spine tenderness. इंस्पेक्शन Is there any? उसके अलावा उसके अलावा sir, I will check about any signs of swelling or temperature. Or is there any gap on palpation? So three things I know. ठीक है, फाइन. अच्छा, क्वेश्चंस जो आपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे उसमें वन वाज रिगार्डिंग दी ट्रॉमा. One was regarding trauma, yes. The other was about the neoplastic lesion, pain get worse with the lying down. और कौन सा रेलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट था? Fever, sir, history of fever. इनकॉन्टिनेंस का पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, sir. Incontinence. यूरिनरी एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस. Right, sir. ठीक है, सो योर फाइंडिंग्स इन दिस केस आर next. Okay, so this patient has bilateral lower limb weakness. Power in the on the right side is 2/5, while in the left is 1/5, and tone is increased. Reflexes are exaggerated. Plantars are upgoing. So, reading these findings, what is your impression? Sir, the lesion is either at the conus or above. So I will check the sensory level. I will ask or recheck the sensory levels. Sensory कहाँ तक check करेंगे आप इस patient में? Sir, in this patient, tone reflexes. Sir, I will go up to the C2. Okay, ठीक है. Sensory के अलावा और क्या चीजें check करना चाहेंगे आप इस patient में? अगर ये सारी चीजें आपको मिलती examination के दौरान? Okay, sir. Then I will, sir. Sir, sphincters, sir, DRE में, and saddle anesthesia specifically. Upper limbs में आप check करना चाहेंगे power patient का? Yes, specifically upper limbs. Here, I will check the upper limb. If the upper limbs are intact, then the lesion is below the cervical spine. I will, sir, check the upper limb. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, To dorsal rule के out. लिए और important चीज जो आप इसमें check करना चाहेंगे, कौन सा reflex हम देखते हैं patient में? For the dorsal spine, sir, we check the abdominal reflexes. कौन सा? Sir, abdominal reflexes. जी जी, abdominal reflex check करेंगे patient में. और ऑल राइट. सो अगर आपको इसको ब्रीफ करना हो फाइंडिंग्स को, तो आप कैसे बताएंगे एग्जामिनर को? So brief summary: the patient is paraplegic with the sensory level at thoracic or dorsal level. Parapresis, yes, power is not zero. So parapresis. So with the sensory level, it is in the dorsal region, and sir, there is a hyperreflexia in both limbs, and the plantars are upgoing bilateral. So tone increase in both limbs.
Okay, so Dr. Mujahid, अगर one line में आपको summarize करने के लिए examiner कहे तो you can just say patient has presented with spastic paraparesis. Okay, sir, got it. The patients are presented with the spastic paraparesis. Okay, how you will proceed in this patient? Sir, I will first I will get a X-ray lumbar spine, क्या करवाएंगे? and then sir I will proceed for investigation. X-ray, CT, lumbar sacral spine, more specifically sir MRI lumbar sacral spine. Most important investigation कौन सी होगी इस time पे? I will also Okay. include the sir dorsal spine. अच्छा ठीक है. Next slide. Next investigation, sir. Okay, हाँ अभी describe कीजिए findings को MRI में जो आप देख रहे हैं. Sir, this is an MRI of the spine showing dorsal region. Sir, there is on the first slide there is that is T1 sir sequence with the sagittal imaging. Sir, there is a lesion behind the vertebral body. I cannot specify the level of the lesion here. On the T2 sequence, there is also hypodense lesion, so that is behind the cord and compressing it from the posterior side. And there is also sir, a blockage of CSF signal on both sides of the lesion. The third image sir, is sir, sagittal also, but with the contrast, T1 with the contrast. So the lesion is taking contrast avidly or homogeneously. Sir, on the lower left, sir, there is a axial image. Sir, there is a lesion that is compressing the spinal cord. And on the lower right, sir, there is a T1 with the contrast image. Sir, the showing lesion homogeneously enhancing as well as compressing the spinal cord anteriorly, sir, and pushing it anteriorly, sir. What is your impression? What is your diagnosis? Sir, it could be sir, a schwannoma. Why you are seeing schwannoma? Intradural, sir, because of intradural lesion. And other sir, other possibility can be an meningioma. The third possibility, sir, is a neurofibroma. How do you classify these spinal tumors? Sir, we classify extradural tumors, then intradural extramedullary, and sir, third ones are intramedullary tumors. So this following case specifically is in which compartment? Sir, it's intradural extramedullary lesion. Okay, why do you say that? MRI Sir, because the cord, sir, the cord is pushed, sir, anteriorly. That is, cord is being and pushed sir, side, so that is yes, more extra medullary. yes, sir, Okay. that's one sign. It's giving sign that is an extramedullary lesion. How will you proceed in this case? Sir, I will ask for other investigations like CT to see the bony anatomy for surgical preoperatively, and then, sir, I will get the sir preoperative fitness for the patient, anesthesia fitness, and then I will counsel the patient about the possible outcomes. Sir, then I will proceed for surgery. Surgical steps थोड़े से brief बता दीजिएगा.
Okay, sir. Then, Choose sir, of first of all, first, patient. sir, yes, sir. First, I will get after the position, after the GA and the positioning of the patient and padding of the patient, I will give incision under, sir, fluoroscopic guidance. I will perform laminectomy one level above and one level below the lesion. And sir, after identifying the lesion, sir, I will take the biopsy, and then I will safely remove the tumor. Sir, I will also use intraoperating neuromonitoring. I will, sir, then bring up the microscope after safe resection of the tumor. Sir, I will close the dura and the skin layers in a reverse manner and send the specimen for biopsy. Will you remove the tumor completely? Yes, sir. In this case, I will try to remove the tumor completely. अगर laterally ज़्यादा tumor जा रहा है and you cannot go there, so फिर क्या करेंगे? Sir, if the tumor is having lateral extension, sir, we can remove one pedicle to access the tumor and then later fix the spine at the end of the procedure. Okay, well then complication क्या हो सकती है? आप क्या counsel करेंगे attendants को? Complications, sir, there can be a cord damage during the surgery, and the CSF leak, sir. Post-operative, sir, deficit can worsen, sir, and there can be a possibility that incomplete removal of the tumor, and later other agents will be taken, and sir, infections, post-operative infection, and the post-operative CSF fistulas. Well done, Dr. Mujahid. You almost answered every question right. And so this was a very easy case. Exam I thought it's a blessing. And it's clearly a dorsal meningioma because of enhancement. It is giving a diffuse enhancement. So it is more in favor of a meningioma. You will go for the complete Yes, sir. excision. In case if you cannot perform the complete excision, the patient can be sent for the post-operative radiotherapy or even redo surgery भी कर सकते हैं in staged wise surgery. Okay, apart from that, rest is okay, almost all covered. Tomorrow we'll further discuss the spine, so in detail हम उसमें discuss करेंगे. Rest आपके examination में you covered almost everything apart from the central anesthesia और perineal sensation. ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट आपको एग्जामिनर को बताना है वहाँ पे. अच्छा, आपने जो है पल्सेस भी नहीं चेक की थी लोअर लिम्ब में, एंड दी लिम्फ नोड्स बोथ आर इम्पोर्टेंट व्हेन कंप्लीटिंग दी लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन. डॉक्टर मैजमी. जी डॉक्टर बाबर, I think we'll call it a day. So let's conclude the session. And a small announcement for tomorrow. Sir, Dr. Gohar Javed is going to join us for the tomorrow session. He's a very senior examiner and wonderful academician. So it's a must-attend session for all of you. And we need volunteers for tomorrow, Dr. Majami. Dr. Kamal requested me for tomorrow's session, and I need one more volunteer, if anyone can. Any of you who has not done the long case yet, so we'll give the priority to that candidate. Anyone can volunteer for tomorrow's session. So sir, I will try, sir. Dr. Mujahid. Dr. Mujahid, sir. Okay, Dr. Mujahid. Hello? You have not any long case yet, right? No, sir. Dr. Mujahid hasn't done a long case. Okay, okay. So let's conclude the session. So Dr. Kamal and Dr. Mujahid for tomorrow's long case. All right. See you all tomorrow. Okay.
Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.